friends, in this lecture, from linguistic point of view, I will talk about difference among three concepts from socio-linguistic point of view, and these three concepts are Pidgin, Creole, and diglossia. So let's move to our topic. First of all, we will talk about Pidgin. Pidgin. Now, what is Pidgin? Pidgin is a variety of language, and Pidgin is used when the two groups or two communities they don't have a common language. जब दो समुदाय या दो समूह की एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होती, then which is created, Pidgin is created. Pidgin का एक Pidgin is created in order to communicate, बातचीत करने के लिए, for business purposes. Especially Pidgin is created for business purposes, and that's why Pidgin is also known as lingua franca. It's also known as lingua franca. तो आपको याद रखना है कि Pidgin कब यूज होती है, when the two groups or two communities they don't have a common language, and that's why it is also known as business language. Clear? So that is called Pidgin. Now, Pidgin has some features. Now, Pidgin is mainly the language of the dominant group or dominant country or the dominant community. जो dominant होती है, it is also known as the language of the colonizers. Colonizers जो हमारे पे राज करने वाले हैं, जो किसी देश पे राज करने वाले हैं, उनकी language as a Pidgin develop होती है. Clear? For example, English can be taken as a Pidgin language when it was developed in what that the colonies, the countries which were under the rule of Britain. So that was then the Pidgin was created. So Pidgin आपको ये याद रखना है कब invent होती है, when the two communities, two groups, they don't share a common language. Now जो Pidgin होती है, it has certain features. पहली features मैंने आपको क्या बताया, limited vocabulary. Pidgin में क्या होती है, limited vocabulary होती है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, Chinese Pidgin, Chinese English Pidgin. Now in this variety there are only 700 words. सिर्फ इंग्लिश के 700 वर्ड्स यूज किए गए हैं. सो चाइनीज इंग्लिश Pidgin, एक तो इसकी लिमिटेड वोकैबुलरी होती है. सेकंड फीचर क्या होती है, नो नेटिव स्पीकर, इसका कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता. अब जो चाइनीज लोग हैं, जो हमारी चाइनीज Pidgin क्रिएट की गई, वो बोलते चाइनीज हैं, लेकिन फॉर बिजनेस पर्पसेस दैट Pidgin वाज क्रिएटेड. सो नो नेटिव स्पीकर. नेटिव मींस जो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं, नेटिव मींस फर्स्ट लैंग्वेज. सो दे आर नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर. थर्ड हमारी इसमें क्या है, लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, नो फॉर्मल ग्रामर. Pidgin में जो ग्रामर नहीं होती, नो फॉर्मल ग्रामर. देयर आर सर्टेन बिट रूल्स ऑफ ग्रामर बट देयर इज नो फॉर्मल ग्रामर. जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हम पहले नाउन पढ़ते हैं, वर्ब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, एंड these things are not there in Pidgin. So that's in brief about Pidgin, that what is Pidgin. I think you are able to understand that it is created. It is also known as business language. It is also called lingua franca. It is used when the two community or two languages they don't share a common language. So a common language is created and it has certain features. Now come to Creole. Creole. Now what is Creole? Actually, Creole is a form of Pidgin. Creole develops from Pidgin. Pidgin से हमारी Creole develop होती है. जब हमारी जो Pidgin होती है, when the Pidgin it becomes the native language. जब Pidgin इतनी develop हो गई कि वो किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी आइलैंड की एक नेटिव लैंग्वेज बन गई. नेटिव मीन्स their first language, so then it is called Creole. So I think it is automatically clear. Creole comes from Pidgin. Creole develops from Pidgin. When Pidgin becomes the native language, the first language of the people of that country, then it becomes a Creole. And for example, Jamaican
Jamaican Creole, Haitian Creole. These are some of the variety of Creole. Now, Creole has also certain features. Number one, what? Formal grammar. Creole की जो grammar होती है वो formal होती है. Pidgin की formal grammar नहीं होती. Vast vocabulary. अब जो हमारी क्रियोल होती है, इट हैज वास्ट वोकैबुलरी. पिजन की क्या होती है? लेस वोकैबुलरी, लिमिटेड वोकैबुलरी. नंबर थर्ड, नेटिव स्पीकर. क्रियोल में क्या होते हैं? नेटिव स्पीकर्स होते हैं, बट इन पिजन्स देयर आर नो नेटिव स्पीकर्स. सो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पिजन एंड क्रियोल. एंड कम टू आवर third concept of today's lecture, and the name of the third lecture and the third concept is diglossia. Diglossia, this word comes from Greek language से आया है. Di means क्या होता है? two, and glossia means language, मीन्स नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेजेस. दो भाषाओं का जो ज्ञान है, जिसे हम बाइलिंगुअलिज्म भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइग्लोसिया. एंड दिस टर्म डाइग्लोसिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स फर्गुसन. दिस टर्म वाज introduced by Charles Ferguson. Then what is the meaning of diglossia? Diglossia means the knowledge of two languages, but it's not so simple. Try to understand. In diglossia there are two languages. A person learns two languages. One language is called high variety, and the second language is called low variety. Low variety, high variety. Low variety you can also understand as spoken form. High variety is learnt in the school. स्कूल में सीखी जाती है हाई वैरायटी, कॉन्शियसली, सचेत होकर आप सीखते हो. एंड दैट्स व्हाई हाई वैरायटी इज यूज्ड इन राइटिंग बुक्स, इन ऑफिशियल वर्क्स, जो ऑफिस के काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, books writing, in that high variety is used. Low variety is it can also be known as a written form, क्योंकि ये written form में use होती है. and low variety is used in spoken form. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो मदर टंग है, जब एक बच्चा when a baby is born तो अपनी मदर टंग सीखता है. so that is called low variety, spoken form. unconscious जो लो वेराइटी होती है, इट इज लर्न अनकॉन्शियसली. अनकॉन्शियसली मीन्स विदाउट एनी एफर्ट, नेचुरली. बट हाई वेराइटी इज लर्न कॉन्शियसली विद एफर्ट. क्लियर? जैसे आपने स्कूल में गए, आपने इंग्लिश सीखी. अब जो इंग्लिश है वो आपकी क्या है? हाई वेराइटी है. हमारे इंडिया में इंग्लिश को हाई वेराइटी समझा जाता है. इट इज यूज्ड इन ऑफिशियल वर्क्स and in writing good books. Clear? But mother tongue is not used in writing books. So that is called high variety and low variety. I think you are able to understand. Diglossia means use of two different languages in two different situations. One is spoken, second is written. One has high standard, second is considered low standard. And that's why जो high variety होती है, जो low variety होती है, it is not known as a bacillect. ध्यान रखना, लो वैरायटी को बैसिलेक्ट कहते हैं. एंड हाई वैरायटी इज नोन एज एक्रोलेक्ट. एक्रोलेक्ट. लो वैरायटी इज कॉल्ड बैसिलेक्ट, हाई वैरायटी इज कॉल्ड एक्रोलेक्ट. एंड द इंटरमीडिएट फॉर्म, बीच का जो रूप है, इंटरमीडिएट फॉर्म, एंड इंटरमीडिएट फॉर्म इज कॉल्ड मैसोलेक्ट. Mesolect means neither high nor low, the middle form. So low variety is called bacillect, high variety is called acrolect, and the middle form is called mesolect. I think you are able to understand diglossia. Diglossia means use of two languages, two variety of languages it may be, or two languages it may be,
in two different situations. One is learned consciously. High variety is learned consciously in schools, while low variety is not learned consciously, it is learned naturally. Clear? So these are your three concepts that I have discussed in today's lecture. First was Pidgin, second was Creole, third was diglossia. And if you have understood something after watching my lecture, don't forget to share this video and subscribe my channel.